Hello everyone, welcome to the session. And this is the fourth session of quadratic equation. Okay, and those who haven't watched last three sessions, I would recommend you to watch first, then come to the session, so that you will get a better idea to solve the questions. If you are solving the sheets, well and good. If not, I would highly recommend to solve all the questions of these sheets. We will provide this sheet in our community. You can check out the description to get a community link. Also, if you want this course in structured manner, you can enroll into this course. You can see here. It is free of cost. You can just visit PrepBee.in and you will get this course. It is free of cost. Apart from this, if you are looking for a mentor, you can check out these courses. Use this code to get an extra discount. Also, we have curated this course playlist in our YT channel. So if you are not interested to visit a PrepBee.in or search the course here, you can simply go to our YT channel and look all the playlist. And this is the important. Today is 29th of June and you have around 3 hours left. So if you are going to attempt this mock by today, you will get these prizes. If not, if you are not able to attempt today, no worries. You can attempt anytime after today. Okay, you can attempt it tomorrow or day after tomorrow. Whenever you're watching this recording, you can attempt because it is a free mock. But 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 the prize is not provided to you. The prize is only for those who are attempting today. I wish you all the very best. Have a good you can attempt into it. मैं तो खत्म ही कर रहा था हैव अ गुड डे बोल के हाँ. लेट्स सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके ऑलरेडी. टुडे वी हैव सम न्यू क्वेश्चंस and this is our first question. I would recommend you to take your 1 minute or 2 minutes. Take your 2 minutes and solve this question. Let's see you are able to solve this or not. The basic is simple. You have to find the roots of the equation. Let's try how will you are going to find the roots of this equation. Let's see how to find the roots because you say here there is no number. If there is no numbering, how you should find the roots? So in this kind of question, you must have to see the equation. You can see the equation is a minus b into x squared, a minus b into x plus c minus a. Now, and they are asking me to find the roots. So I know there is two methods to find the roots. One is that x is nothing but minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So I assuming like you guys if solve this question using this method, right? If not, there is another way was factorization. But is it a factorization possible here? The factorization part is possible here. If you see the equation, are you able to like factorize the variables? No, you can't. So what you can do in this kind of equation? So it is a fixed equation. Whenever you get this kind of equation, you don't need to solve using a formula or factorization. Simply see here. You can see a minus b plus b minus c plus c minus a. If I add this, or in simple way, if I put x is equal to 1, in simple way, if I put x is equal to 1, you can see the value of this equation should be equal to 0, right? A is going to cancel with minus a, b minus b minus c c. It all will get cancelled and you will get at the end 0. It means it is clear to me that the one of the value or root of the x, you can simply say the root of the equation is 1. So from here I will get one of my root like 1. Now I have to find a second root. So how could I find a second root? Now you can use the product formula. You know what is the product formula? Product of the equation. Okay, if you say the product of what you will get minus, sorry, c by a. This is what a product of like a roots. If the product of roots is c by a, you can simply say that product of roots are alpha into beta, which is equal to c by a. So what is c here? This is the value of equivalent to c. The c minus a is equivalent to c. What is a? A is nothing but a minus b. Now the one of the root is I already found that is 1. So if the one root is 1, the second root should be beta, that is nothing but c minus a
minus a minus b. So second root should be c minus a upon a minus b. This is what your roots. So what are the two roots? This is nothing but alpha. You can simply say, ठीक है, आप बोल सकते हो इसे डायरेक्टली, the value for alpha is equal to 1, right? And as you all know, what is alpha beta? Alpha beta is nothing but the value for x is equal to alpha and value for x is equal to beta. These are the two roots. So you already got two roots. One is 1, second is c minus a upon a minus b. Hope you got the point. If you are understood this question, solve this one. This one was a similar question. You can try this on your own pace, and you can see here also a minus b minus 2c, b plus c minus 2a, c plus a minus 2b. You can see when you add, like when you put x is equal to 1 here also, you will get the sum equal to equivalent to 0. So one value of the root, one of the root is 1. You have to find a second root. You can do the same using the same method, same approach. Use the formula for product method and like a product of the roots, and you can simply get your answer. Let's jump to the next question. This is a good question. I would recommend you take your 2 minutes and try to solve it. Okay, so you got option A the answer. Let's see what is the exact answer. Option A आ रहा है लोगों का. See, this is the equation a into b minus c x square and plus b into c minus a x plus c into a minus b is equal to 0 are real, like they have roots which are real and equal. Roots are real and equal, it means my d is equal to 0, right? If my roots are real and equal, I would simply say my d is equal to 0. And I hope most of you use this approach. If you use this approach to get the like these options, I would say भाई बहुत लेंदी कर दिया आपने. ठीक है, इतना लेंदी नहीं करना था. इसको और शॉर्ट में कर सकते थे हम. ओके, और शॉर्ट में कैसे करेंगे? सो बिकॉज आई नो if my roots are equal, so if let's say if one of the roots is alpha, then second root must be alpha because both are equal. And if I do sum of the roots, okay, give me a moment. Yeah, so if I do sum of the roots, so sum of the roots is nothing but alpha plus alpha, which is 2 alpha, and let it be. रुक जाओ यार, ये मत करो. लेट्स से यही अप्रोच से करके देखते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, b square minus 4ac, which is equivalent to 0. Now, what is a b here? Here b is nothing but b into c minus a. This is the b, इसका square minus 4ac. What is a? A is nothing but, you will get a is nothing but a b minus c into c, that is c is nothing but c a minus b, and which is equivalent to 0. If I open it, what I will get? I will simply get b square c minus a whole square minus 4 time of, from here I will get ac and b minus c, a minus b. If you solve using this approach, don't you think it is very long? Is it? Have you solved using this approach? Only. Okay, so you got option A should be your answer if you solving this by using this approach. ये तो नहीं आना चाहिए था. Give me a moment, let me check. ये तो नहीं आना चाहिए. So as you are getting A is not an op like an answer.
एंड अगर आप ये मेथड से करोगे तो बहुत लेंदी होगा, एंड ट्रस्ट मी मतलब फंस जाओगे। तो आपको करना क्या है? तो जस्ट आई टॉट यू अप्रोच। यू कैन सिंपली सी हियर, if I put x is equal to 1, if I put simply x is equal to 1, what will I get? You can see here a into b minus c, and when you open it, let's open it, what you will get? If I solve this part like b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b, when you open it, you will get the answer should be equal to 0. Let's try open it. Let's say ab, here you will get ac minus plus bc minus ab plus ca minus bc. You can see plus ab minus ab cancelled, minus ac plus ca cancelled, plus ac minus bc cancelled. It means from here you cleared like the one of the value or is equivalent to 1, like x is equivalent to 1. Hope it is clear. And because the roots are equal, it means both roots are equivalent to what? 1, right? It means one of the second root also equivalent to 1. So by this, I could simply solve this and trying to solve this using or method like sum of the roots, and second one is product of the roots. So I could solve using these two method, and I will see which one is satisfying this condition. So let's solve using sum of the roots. If I solve using sum of the roots, what I will get? Sum of the root is nothing but 1 plus 1, which is equivalent to minus b by a. What is b? B is nothing but this part minus b upon b into c minus a upon a. What is a? This is your a b minus c. And let's product of the groups को अभी थोड़ी देर के लिए हटाओ, इसे इसे सॉल्व करते हैं. From here you will get 2 equivalent to minus, solve it further, what you will get? bc plus ba, right? Here because ये जो है डिवाइड में है, I will shift it here because ये डिवाइड में यहाँ पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट 2 into 2a b minus c. Solve it further, you will get something like this: 2ab minus 2ac is equal to minus bc plus ab. Now this is plus ab, this is ab. मैं ab को एक साइड ले लेता हूँ. इट इज इजी टू बी कि ab एक साइड रहेंगे तो अच्छा रहेगा. So let's say ab one side, 2ab, here it is plus ab, here it will come to become minus ab. ये माइनस में इसको इधर भेज दो, तो आई विल गेट फ्रॉम हियर दैट इज 2ac minus bc. From here I will get ab. अभी माइनस bc को भी अगर मैं इधर ला लूँ तो क्या मिलेगा मुझे? आई वुड सिंपली गेट दिस प्लस bc विच इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम ऑफ ac. यहाँ b कॉमन दिख रहा है. ओके, एक मिनट रुक जाओ. तो फिर इसमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं मुझे एक से ही, तो मुझे सॉल्व करके दोनों चेक करना पड़ेगा. शायद ये प्रोडक्ट से आए. लेट्स सी यहाँ से कुछ बन रहा है या नहीं. ओके लेट्स सी, यहाँ से ये कर लो. चलो यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया. व्हाट आई लेफ्ट? ए प्लस सी विच इज इक्विवेलेंट टू 2ac. मैंने क्या किया? इन ac से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और ये b से इस b इधर में शिफ्ट कर दिया. व्हाट आई डिड, आई सिंपली a प्लस सी को मैंने ac से डिवाइड कर दिया एंड 2 के पास b भेज दिया. ऑल्सो इफ आई सॉल्व इट फर्दर, मुझे ये ऐसे मिल जाएगा: a अपॉन ए सी प्लस c अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 2b. वी सिंपली सी ए कैंसल, सी सी कैंसल,
I will get from here 1 upon c plus 1 upon a is equal to 2 upon b. And this is nothing but equal to this value, option D. And that is your answer. ऑप्शन डी इज योर आंसर. ये सेम चीज आपको प्रोडक्ट से भी मिल सकता है, आई गेस. इफ यू ट्राई, प्रोडक्ट से भी कर सकते हो. लेट्स ट्राई. चलो एक ट्राई दे के देखते हैं प्रोडक्ट से मिल रहा है या नहीं. मैं जल्दी से करूंगा, इतना कुछ मैं डिटेल नहीं करूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट में. सो 1 into 1 इज इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाय ए. सी बाय ए, सी नथिंग बट सी, ये हो जाएगा अपॉन ए. तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो आई विल गेट ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू टू. टू कहाँ से आ गया, ए सी माइनस सी बी. यहाँ पे देख लो, ये ए सी है, ये भी ए सी है. ए सी को ए सी के पास भेज दो, सी बी को सी बी के, इसको यहाँ पे लगता, तो ए बी माइनस, सॉरी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए सी. कैन यू सॉल्व इट फर्दर. बी को कॉमन अगर मैं ले लूँ यहाँ से, आई विल गेट बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए सी. एंड नाउ यू कैन सी ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है. मतलब आगे मैं सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन, आई विल गेट इक्वेशन 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी. दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन इक्वल है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो रिमेंबर, ये अगर दिख जाए तो यहाँ रियल रूट्स एंड इक्वल है, तो उसको समझना है आपको. डी इक्वल टू जीरो से सॉल्व नहीं करना है. इससे करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेंदी, और आंसर भी रॉन्ग आएगा. ए आंसर आ रहा था जो कि रॉन्ग है लोगों का. राइट, तो आपको इस मेथड से करना है. होप यू अंडरस्टूड. अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं. चलो. Now the equation x square plus 5x minus 7 is equal to 0 has roots a and b. Equation 2x square plus px plus q equal to 0 has roots a plus 1 and b plus 1. Find the value for p plus q. Now remember, ये हमने कर चुके इस काइंड का इक्वेशन, तो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, आप लास्ट सेशन देख लेना. मैं बस यहाँ समझा दे रहा हूँ क्या करना है. ये इक्वेशन आपको पता है, इसके रूट्स आपको पता है. मैंने आपको बताया था कि आप नया एक और इक्वेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. व्हाट यू हैव टू डू सिंपली, because here they ask you a plus 1, what you can do simply x minus 1, put replace x by x minus 1. So this is what your new equation become. And if you solve further, you will get some equation. Whatever equation you will get, just compare that equation with this one, and you will get your value for pq. I hope it is clear. Okay, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, देन जो भी वैल्यू है उसे सॉल्व कर लेना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the roots of quadratic equation is 5 less than the product of the roots. If one root is 1 more than the other root, find the product of the roots. Try it. आपको sum of the roots पता है, product of the roots कैसे निकालते हैं आपको सब पता है. Give it, you have 2 minutes. Try this. 12 or 2. Let's see. Let's see 12 or 2 is answer or something else. So the question is, like in the question it is given that sum of the roots of quadratic equation is, like sum of the roots. What is sum of the roots? It is nothing but alpha plus beta. सम ऑफ द रूट से ही होता है, अल्फा प्लस बीटा. इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा. इससे 5 कम है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट. इफ यू रीड अहेड, what did they have mentioned? If one root is root 1 more than the other, that's same. What it is saying, if one root is alpha, so beta should be 1 more than the alpha. Let's say alpha plus 1. So if one root is alpha, so other root will be alpha plus 1. This is what they are saying.
Then find the product of the roots. If it is given, you have to find the product of the roots. Now let's solve. In the place of beta, I would like to put alpha plus 1 in the place of beta. So this is nothing but alpha plus 1. I'm replacing beta by alpha plus 1. So from here, alpha is nothing but alpha plus 1 minus 5. If you see, if I take a solve it further, we'll get to 2 alpha plus 1 is equal to alpha square plus alpha minus 5. If I solve it further, I will get, let's say, इन सबको यहाँ भेज दो, because उधर जाएंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे. So you can simply see that alpha square plus alpha minus 5, this is nothing but 2 alpha है, यहाँ पे जाएंगे तो minus 2 alpha हो जाएगा. This plus 1 है, इधर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा, which is equivalent to 0. If you solve it further, you will get alpha square minus alpha minus 6, which is equal to 0. And now if you solve this, how you can solve? How we told you the approach. You can see this is nothing but quadratic equation, right? क्या दिख रहा है? Quadratic equation ही है. If you solve this quadratic equation, you have to make like a approach is 1 into minus 6, that is minus 6. In second approach, you have to break down into a, in step 2, break down it two way, like a two form such so that the value should be minus 1. कैसे बनाओगे यार? 2 3 का माइनस साइन चाहे तो मैं माइनस इसे दूंगा, इसे प्लस दूंगा. You can see here I will get a minus. Okay, if you solve it further, you will get yeah. आगे कैसे करना है इसे? सिंपली 2/1 and 1/, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली सिंपली आई विल चेंज द साइन ऑफ द values. So the one of the value is -2, second one is 3. So what they are asking to me? They are asking me, find the product of roots. Find the product of roots. So if I multiply these, what I will get? I will get -6. How we are getting 12 or 2? चलो कि कैसे आ रहा? ऑल्सो इतना सॉल्व भी नहीं करना था. अगर मेरा इक्वेशन ये आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालते मुझे तो पता ही है ना. सिंपल सा मुझे क्या लगाना है? इफ दे आस्क प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, I know how to solve product of that is nothing but product is also equal to, you can say alpha plus 1 is equivalent to c by a. C is nothing but -6 upon a 1, that is equivalent to -6. -6 ही तो आंसर है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन में -6. ओके, सो सी हियर मैं क्या कर रहा था, मैं दिस इज नॉट अप्रोच. वो आपका सही था, लेकिन यहाँ सबके दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज 2 and -3. ओके, और इन शॉर्ट सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, -2 and 3. ये दो वैल्यूज मिला अल्फा के. मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है, किसका प्रोडक्ट चाहिए? मुझे मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए. सो इफ यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं. इफ अल्फा की वैल्यू अगर मैं -2 ले रहा हूँ, इस केस में मेरे बीटा क्या बनेगा? दैट इज बीटा इज नथिंग बट -1 प्लस 1, सॉरी -2 + 1. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट अ -1. सो यहाँ पे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूँ, what I will get? -2 into -1. From here, what I get? I will get 2 answer. Similarly, अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा की एक और वैल्यू निकल सकते हैं. अगर मैं इफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 3, अगर अल्फा 3 है तो बीटा कितना होना चाहिए? दैट इज 3 + 1 इज नथिंग बट 4. सो अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट? 3 × 4, जो कि इक्विवेलेंट है 12 के. सो द टू आंसर इज 2 and 12. दिस इज द आंसर. एंड ये ऑप्शन बहुत बढ़िया बना रखा है, क्योंकि मैं गलती से ये करके मैं आगे बढ़ता और मेरे -1 हो जाते. बिकॉज सी,
जैसे ही मैंने ये इक्वेशन देखा, मुझे लगा कि चलो ये इक्वेशन से काम हो गया। बट ये इक्वेशन से कुछ थोड़ी लेना देना है, मुझे लेना देना किससे है? मुझे जो, ये तो रूट का इक्वेशन है ना। और मैं रूट के इक्वेशन से अगर आंसर निकाल के मार्क करूंगा तो -6 देख के चमकता हुआ आंसर है, ये मार्क करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। वो दोनों डिफरेंट इक्वेशन है, ये रूट्स है, ये रूट का इक्वेशन है। हम जो इक्वेशन है उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रूट की इक्वेशन थी। सो दिस इज द ऑप्शन बी इज योर आंसर। दिस वन इज गुड एंड आई रिकमेंड। अरे यार, यहाँ पे साइन नहीं लगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा लो। यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे करोगे? दो तरीके आपके पास। या तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वैल्यू निकल जाए तो बहुत बढ़िया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेट से वैल्यू निकल पा रही है कि नहीं चेक कर लेना, अगर नहीं निकला देन यू हैव ऑप्शन आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मैंने बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a minus b whole square is, it is nothing but a square minus 2ab plus b square. Also a square minus b square, ये क्या होता है? a plus b, a minus b। ऐसी पूरी एक लिस्ट है, वहां पे आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू भी मिल जाएंगे, दैट इज नथिंग बट a क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ए टू द पावर 4 की भी आप निकाल सकते हो, तो ए टू द पावर 4 के लिए आई वुड प्रेफर, माय बैड, ये गलत कर दिया मैंने। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है, होल क्यूब की वैल्यू है, ए प्लस बी होल क्यूब। तो ऐसे बहुत सारे आपको एक लिस्ट मिल जाएंगे, यू कैन चेक आउट इन आवर ग्रुप। मैं आज ये लिस्ट शेयर कर दूंगा फॉर्मूला की, सारे फॉर्मूले से। इधर यूज दैट वे, और सिंपली यहाँ से आप दो रूट्स निकाल लो अल्फा बीटा की वैल्यू इफ पॉसिबल, एंड ट्राई टू यूज दैट वे टू सॉल्व दिस। लेट्स सी, नेक्स्ट सेशन में ये करवाने वाला हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है। दिस वॉज लाइक हियर ऑल्सो यू कैन सी अल्फा अपॉन बीटा मुझे बोला गया है, अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, ओके दीज आर द रूट्स। तो आपको इक्वेशन बनाना है यहाँ पे, इक्वेशन बनाना है जिसके रूट क्या है, वन ऑफ द रूट शुड बी अल्फा अपॉन बीटा एंड सेकंड रूट शुड बी बीटा अपॉन अल्फा। दीज आर द टू रूट्स। तो इस केस में इक्वेशन कैसे बनाओगे? हैव अ ट्राई, लेट्स सी यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। गिव 2 to 3 minutes, try it. Now see this question, what they asked me like alpha and beta are the roots of this equation. We have to find the equation whose roots are this. So if I am not wrong, मैंने एक आपको equation बताया था। I told you one equation that is sum of the roots in the form of sum of the roots and product of the roots, right? That is nothing but x square minus sum of the roots, sum of the roots into x plus product of the roots, which is equal to 0। और मैंने इसे आपको शॉर्टकट में लिख के बताया था, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। This is what the general, like a generalized form of the equation when you have given a sum of the roots and product of the roots. So what is the use of these two? So I will use these and try to find the equation for these, because they have given me a equation where they have given me this equation. Okay, they have given me this equation
If you compare it with this, you will get the value for alpha plus beta, sum of the roots and product of the roots. But I have to find the equation whose roots are these. If these are the roots, what is the sum of the roots? From here, what is the sum of the roots? This is what the sum of the roots. What is the product of the roots? This is what the product of the roots, right, guys? So, if, like, sorry, अरे यार, this is what the product of the roots. If I find the product of the roots, what I will get? I will simply get this all will get cancelled and I will get 1. So product of the roots, I will get 1. If I sum this, how could you sum? You can simply do a cross multiplication, that is alpha into alpha, alpha square, plus beta into beta, it should be equal to beta square, upon alpha into beta, that is nothing but alpha into beta. So you have a value for alpha into beta. What is the alpha into beta? Alpha into beta is nothing but product of the roots of this equation. अगर मैं इसका sum of the roots निकालूं यहाँ का, so I will get sum of the roots is equal to -6 and product of the roots equal to -9, right? So -9 should be here, and I have to find this value alpha square plus beta square. To find alpha square plus beta square, I know this identity. Alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus 2 times of alpha beta plus beta square. If I solve it further, I will get from here alpha plus beta whole square minus 2 times of alpha beta is equal to alpha square plus beta square. Okay, this is beta square. So from here you will see I can easily get alpha square plus beta square. So alpha plus beta, the whole square. What is alpha plus beta? I know alpha plus beta is equal to -6. So -6 का whole square minus 2 time of alpha into beta. What is alpha into beta? Is nothing but -9. This is the value for alpha square plus beta square. If I solve it further, I will get 36, and if I solve it, multiply it, these two, you will get a plus 2 9s are 18. When you add these, you will get something around 40 and 57, right? So 57 this, and if you put here the 57, okay, got no worries. We'll give you access to unmute yourself. Give me a moment. Okay, my bad, sorry guys, मैं कुछ अलग ही नशे में हूँ. 36 होगा ना, 6 का स्क्वायर. Okay, 6 square is 36, 36 plus 18. And if you add these two, you will get your answer of 54. So here you will get a 54 upon 9, and you know 54 9 के डबल में आता है. 9 5 the 45, 9 6 the 54. 9 6 the 54, because it is minus तो यहाँ पे आ जाएगा -54. These are the values I have to simply put in the equation. The equation should be what? X square minus sum of the roots. Sum of the roots is what? This is my sum of the roots. This is what my sum of the roots. So the value for this is -6. So it will become plus 6x plus product of the roots. This is what a product of the roots. So I will get 1, which is equivalent to 0. This is your answer. This is the equation or required solution. Hope you got the question. अगर ये समझा है, आगे बढ़ते हैं. ये शायद मैंने करवा चुका आपको ऑलरेडी. सी है व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा अलग है ये. माइनस 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5/4 इज इक्विवेलेंट टू 0. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाउंड. कैसे करोगे? करके देखो, सारे आइडेंटिटीज लगाओ. होमवर्क है ये. इसमें ट्रिक कुछ है, कर कुछ और देख के बताता हूँ.
ट्रिक नहीं है, ट्रिक से नहीं होगा ये भी सेम क्वेश्चन, नथिंग न्यू, ट्राई दिस ऑल्सो। या दिस इज अ गुड वन आई थिंक, ये भी कर ही लोगे आप, बिकॉज देयर इज, इट इज गिवन दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच डिफर बाय 7, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेट्स से द वन इज a, second is b, so b is differ by 7, so simply you can write b is nothing but a minus 7, right? Such that the square of the larger integer exit exits the product, t है ये, product of two integer by 84। देखो क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ द लार्जर इंटीजर, लार्जर कौन सा है, आई a should be larger because a minus 7 is equal to b है, and both are positive, that means a should be larger, so a square is equal to, or you can say simply a square exits, किससे एग्जिट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ a into a minus 7 by what, by 70 84, तो minus 84 कर दो, सॉरी प्लस 84 कर दो, देन इट विल गोइंग टू एग्जिट, ठीक है, मतलब इससे 84 से बड़ा है। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट सिंपली a स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 84। ठीक है, फिर यहाँ से तो a स्क्वायर इस पर कैंसिल हो जा रहा, यू विल गेट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ a, two positive differ by 7, they differ by 7, it means one difference between both of them is 7, is that the square of larger integer exceed this product of two integer by 84, so larger integer is this one, if it is exceeding the product of two integer, this is the product, and exceed by 84, what they are asking, okay, they are asking for two, okay, okay, yeah, from here you will get a value for a आ गया, तो बाकी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो यार, मैं गलती यही कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट में कर रहा हूँ। दे आर आस्किंग यू टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सो आई थॉट यार दो वैल्यू कैसे आ रही है, आई थॉट ए की दो वैल्यू कैसे आ रही है, यू डोंट हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए एंड दिस बी, so you will get answer, your answers simply from here, okay, if you do this you will get a value from here, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, and rest you can solve it, a की वैल्यू 11 है कुछ, I think if a is 11 तो खत्म ही कर दिया मैंने यार, this is the answer। Yeah, this is a homework, good one, this is a relationship you have to found, that's, you can try it in your own pace। ये तो मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था, बट ये थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है मैं अभी नहीं बताऊंगा, ट्राई करो ये, तो ये होमवर्क मतलब आपका, दिस आर होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट, एंड नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन शुड बी लाइक, इट मे बी ऑन ट्यूसडे और मंडे, नॉट श्योर, मैं टाइम टेबल भेज दूंगा, आप चेक कर लेना मंडे को है या ट्यूसडे को है, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दैट सेशन आई एम गोइंग टू टीच most of the concepts, and you can simply say that is a 2 hour session, 2 hour session में max to max I will try to cover it, because I have to finish quadratic and I have to move to ahead with other part, okay, so मैं I will try to cover it in a single session, if not possible एक और सेशन होगा, बट या नेक्स्ट सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लंबा चलेगा, खा पी के बैठना, ओके, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया जाके अटेम्प्ट कर लो, कर चुके हो, वेल एंड गुड, यू कैन चेक आउट दिस ऑफरिंग्स इन आवर वेबसाइट, क्या है ये समझा देता हूँ,
You will get a mentorship from our side. Okay. Apart from this, there is a detailed mock analysis we will provide you, and there is a 16 series question booklet and master classes. You can look for it. This is very important. If you are a CAD aspirant, I would recommend you to try these. And there are other offerings also. You can check out this. Simply visit prepbee.in. You will get all the detail there. Now let's see here. Thank you and nothing else. See the description to get a link of our community. You can join our community to get all the PDFs and other materials. So I wish you all the very best. Have a good day. Jai Siya Ram.